Good morning, everyone. How are you all doing? So I'm back. I'm Anshuman, your English faculty. So today our topic would be on sentence rearrangement. Okay. So first of all, I'll be just briefing about what kind of questions you get in sentence arrangement or what exactly sentence rearrangement is. So first of all, let's talk about introduction, right? What happens in sentence rearrangement question is this, that you are provided with certain sentences, right? Those sentences are a part of a paragraph, right? Now that paragraph is jumbled, right? By jumbled we means what? That the sentences in that paragraph would be in a disorganized order, right? So the sentences in that paragraph wouldn't be provided in a correct form or in correct sequence, right? That means the paragraph would be jumbled. So what is your task now? Your task is to rearrange these sentences in a proper sequence, right? And what is the purpose of this? Why you need to make a correct form? Why you need to make a correct pattern, a correct sequence to make meaningful, okay, meaning make the paragraph meaningful, right? So what you need to do is you need to rearrange those sentences in a correct pattern so that after reading those sentences, okay, you can make a meaningful paragraph. Otherwise, at present, that paragraph is, it doesn't have any sense because the sentences, obviously those sentences are not in a proper sequence, right? So what you need to do, you need to see, okay, everything, right? You need to see the context, you need to see all the grammatical rules, right? Whether it's grammatically correct or not, right? Whether it's contextually correct or not, right? And then you need to make the correct pattern of those sentences. Okay, so first of all, before jumping into the questions and other things, first of all, I would like to tell you the types of questions that can come in the sentence arrangement part. Okay, so first thing is all sentences would be jumbled. You may get questions where all the sentences, okay, you might get 5 or 6 sentences, right, where the sentences, all of those, okay, all the sentences are jumbled, right? So what you need to do is you need to make a correct sequence of those sentences, right? So you need to work on all those sentences, right? So you won't be getting any help, right? Because all the sentences are jumbled, right? Then second, first sentence would be fixed, which is in a correct order. So in this type of sentence, you may already have a fixed sentence in the beginning of the paragraph, in the beginning, right, where that sentence is already in a correct form, right? Correct form means a correct sequence, a correct order, so that sentence would be already fixed. You don't have to change it. ठीक है, आपको उसको क्या करना है, उसको छेड़ना नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके बाद के जो sentences होंगे, you need to work on that. तो आपको उन sentences पे आपको क्या करना है, काम करना है. ठीक है? Okay, then last sentence would be fixed, which is in a correct order. So the next sequence is next type of question is जहां पर आपको क्या आपके पास क्या होता है, जो लास्ट क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन फिक्स रहेगा. जैसे पहले वाले में फर्स्ट क्वेश्चन था वो फिक्स था, सो वैसे ही यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेंटेंस फिक्स रहेगा. और आपको क्या करना है, लास्ट सेंटेंसेस से पहले जितने भी सेंटेंसेस है, यू नीड टू फाइंड अ करेक्ट पैटर्न ऑफ दोस सेंटेंसेस. ओके, देन the last type of question is both the last and first sentence would be fixed, which are in correct order. So here what happens, आपके पास already एक first और एक लास्ट सेंटेंस आपके पास फिक्स्ड है, राइट? उनका जो पोजीशन है दैट्स फिक्स्ड, एंड व्हाट यू नीड टू डू, उनके बीच के जो सेंटेंसेस हैं, यू नीड टू वर्क अपॉन दैट एंड यू नीड टू फाइंड अ करेक्ट पैटर्न ऑफ दैट, राइट? सो इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इट बिकम्स easier for you to answer because you already know the beginning of the sentence, so you already know from where that paragraph starts, right? Or what is the context of that paragraph, so it becomes easier to go with the flow and to find the second sentence after that. And also you already have the conclusion part, right? You have the concluding sentence in the last, right? So you have to just make a correct sequence, okay, of the sentences which are in the middle of the first and last sentence. Okay, so this would be a bit easier, right? But where you have to like work on all those sentences where all the sentences are jumbled, right? तो वहां पे थोड़ा सा आपको effort लगाना होता है, but it's all easy, right? Okay.
Now, we see this tricks to find the correct sequence, right? So what are the tricks through which you can find a correct sequence of this, right? Okay, so the first is the paragraph would usually start with an article or a noun, right? It's not necessary, but it is usually, okay, aap kaise, these are the tricks which can help you to find the correct sequence of the sentences, right? So first thing is this, that the paragraph would usually start with an article or a noun. So हमेशा आप देखेंगे यूजुअली, ठीक है, इट हैपेंस कि जो एक सेंटेंस रहेगा, फर्स्ट सेंटेंस रहेगा या जो पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, सो दैट स्टार्ट्स विद, it can start with either an article or it can start with a noun, right? It can either start with an article, for example a, an, and the, or it can start with a noun, a name of any person or an object or anything, right? So this is the thing. Then the paragraph can't start with pronouns and conjunctions, right? Why is it? Because you know what are pronouns, right? Pronouns are the words which we use in place of nouns, all right? And what's the purpose? To avoid the repetition of nouns, right? So to avoid using the names again and again, what do? We give them we give the noun a temporary name, right? So that's called a pronoun, right? For example, he, she, it, his, her, right? Or this, that. So these are the pronouns. Now, right, what is the definition? I just told you, right, that we use pronouns, right, to avoid the repetition of noun, right? Now, अगर मैंने पहली बार, ठीक है, किसी के बारे में बात कर रहा हूं, so obviously मैं उसका नाम जरूर लूंगा, है ना? लेकिन after that, I don't need to take his or her name, है ना? So what I'll do, I'll use the pronouns. That means शुरू में तो नाउन हो सकता है ना, लेकिन आफ्टर दैट प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन पहले तो नहीं हो सकता. अगर पहले होगा तो इट मींस कि उसके पहले भी उस चीज के बारे में या उस इंसान के बारे में, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की गई होगी, है ना? तो प्रोनाउन कैन स्टार्ट sentence. Sentence means a paragraph, right? Because we need to start with fresh, so उससे पहले अगर स्टार्टिंग में नाउन प्रोनाउन है तो दैट मीन्स उसके पहले भी क्या बात की गई होगी. सो दैट मीन्स इट कांट बी द फर्स्ट सेंटेंस, राइट? देन सेम कंजंक्शंस, है ना? अगर yet यूज हुआ है, ठीक है, अगर but यूज हुआ है, so it can't start with a few conjunctions, है ना? Like आपके पास और हो गया, ठीक है, आपके पास but है, yet है ना? So these types of conjunctions can't start a sentence, right? Why? Because these are the coordinating conjunctions, right? And since these are coordinating conjunctions, so we need a clause already before these sentences, right? तो क्योंकि हमें एक already clause चाहिए जिसके बाद हम conjunction लगाते हैं और जिसके बाद फिर हम another क्या करते हैं, दूसरा एक clause हम join करते हैं, right? तो that is why this conjunction can't start sentence, okay, in the beginning of a paragraph, right? Because अगर ऐसा है तो हमें paragraph से भी पहले कुछ ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रहा था या ये जो क्लॉज है ये किससे कनेक्टेड था, ठीक है? सो दिस इज द वन थिंग. देन relative clauses using relative pronouns or relative adjectives can't start a paragraph such as that, which, where, whose, etc. ठीक है, आपके जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, Okay, students. So yeah, ये वाला point, relative clauses using relative pronouns or relative adjectives can't start a paragraph such as that, which, where, whose, etc. So I hope you all know what are relative clauses and what are relative pronouns or relative adjectives, right? The clauses which use relative pronouns or relative adjectives, right? These make what we call relative clauses,
राइट। एंड रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये होते क्या हैं, ये होते हैं जो एक प्रोनाउन और एक नाउन को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई मेट द बॉय, राइट, whom I can say I met the boy who stole my phone, right? Or I got a book, right, which was I got a book or I bought a book which was very expensive, right? So यहाँ पर जो words use हुए like which, that, है ना, जो मुझे कनेक्शन बताता है किसके बारे में, कि हाँ वो बॉय था और उसने वो किया या वो वाला बॉय था, ठीक है, यानी जो एक रिलेशन बताता है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन what function they are doing. Are they working as an adjective or are they working as pronouns, right? So ये आपके relative clauses, ये जो जिनके साथ relative pronouns और relative clause यहां पर join होते हैं, that is called the relative clause, right? So now if I tell you कि अगर मैं आपको एक example दूं, the same example है ना, अगर मैं कहूं कि I bought a smartphone, okay, or if I can say I bought the same smartphone, right, that he bought, है ना, मैंने वो same smartphone खरीदा जो उसने खरीदा, है ना। So यहां पर देखिए what is a relation, है ना, relation कौन बना रहा है, that, है ना, that। So यहां पर मैंने जो स्मार्टफोन खरीदा वो कौन सा स्मार्टफोन था, वो वाला जो उसने भी खरीदा, है ना। So अगर मैं कहूं simply that he bought, अगर मैं सिंपली कहूं that he bought, है ना, if I see this example, ठीक है, कि that he bought, जो उसने खरीदा, so are you able to understand the meaning of this particular clause, है ना, this is the clause because we have a subject here and we have a verb here, this is the definition of clause, right? But is this clause complete? This I mean, does it make a sense or does it convey us the full message कि हाँ what it is trying to say actually no, है ना, उसने जो खरीदा, क्या खरीदा मुझे कुछ नहीं पता, या what I'm trying to say I don't know that. So what I need to do, I need to look at something, right? I need to look at the first clause, right? This is called your dependent clause or the relative clause because of the word that, है ना। So मैं क्या कह सकता हूं, I bought the same स्मार्टफोन, में ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, ओके। So I bought the same smartphone. Now I get to know कि हाँ जब मैं पढ़ता हूं I bought the same smartphone तो मुझे पता चलता है कि हाँ that he bought, ठीक है। सो अगर मैं मीनिंग फाइंड आउट करना चाहता हूं दैट ही बॉट का, तो मुझे किसको देखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, तब जाके मुझे समझ में आएगा डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि जो मैंने खरीदा, मैंने वो स्मार्टफोन खरीदा जो उसने खरीदा। नाउ आई अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ दिस, राइट। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज जब आप क्वेश्चंस इस पर करते हैं जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो नोट कीजिएगा कि द सेंटेंसेस कांट स्टार्ट विद द रिलेटिव क्लॉजेस, है ना, क्योंकि उससे पहले आपको क्या चाहिए होता है, उससे पहले आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है, सो दैट यू नो टू गेट इट्स फुल मीनिंग, राइट। अगर आपके पास ऑलरेडी एक क्या है, इट कैन बी, बट अगर आप देख रहे हो कि डिपेंडेंट क्लॉज एक जो पैराग्राफ है वो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो इट वुड बी रॉन्ग, है ना, वो उसके पहले आपको ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है, तो कीप इन माइंड कि रिलेटिव क्लॉज से नहीं स्टार्ट हो सकता है एक पैराग्राफ, ठीक है, या एक लाइन, क्योंकि उससे पहले आपको क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज की आपको जरूरत है। नाउ be aware of the theme of the paragraph, that what it is about, ठीक है। when you go through all the sentences, एक पहली चीज होती है कि आप सभी sentences को go through करें और उसका meaning समझे कि what it is trying to say actually, है ना, what is the theme of the passage, what is trying to talk about, right? This helps you to find the what, find the introductory part, and that would be the first sentence. So when you are aware of the theme of the passage, right, of the paragraph, so what happens ki it helps you to do what, it helps you to find the introductory part, it helps you to find the first sentence कि अगर
जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो इस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हो सकता है. फर्दर व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ ऑल द द मीनिंग और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, आपको एक और क्या चीज पता चलती है, यू आर एबल टू फाइंड द कंक्लूजंस ऑफ द थीम ऑफ द पैराग्राफ एंड दैट सेंटेंस वुड बी द लास्ट सेंटेंस, राइट. सो व्हाट हैपेंस कि आपको फिर इसमें पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए ये आपको पता चल सकता है, सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है ये भी आपको पता चल सकता है, ठीक है. सो इट हेल्प्स यू टू फाइंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड द कंक्लूडिंग पार्ट. Okay, now I want all of you, so this is the first question that we would be doing. I want you to go through these sentences. Here you have like 5 sentences, okay? Okay, so so here are on your screen like 5 sentences, and these sentences are jumbled, right? These sentences are not in correct form. So what I want you to do is go through, take a pen and paper, right, in your hand, right, be ready, and read these sentences and then try to set them in a correct sequence, right? आप find out कीजिए कि कौन सा first हो सकता है, कौन सा second, third, fourth and then fifth. Okay, so please take your time, just 1 minute or 30 seconds, right? And then I'll be back on the screen, okay? Okay, students, so I'm back. Yeah, so I hope you must have gone through all these sentences and you're able to find the correct sequence. So I want you all to comment, please, okay, that what can be the correct sequence. So I appreciate that if you people comment down, right? Okay, so let's start. Let's read it, okay?
Read one sentence one by one. Okay. So absence of other parental figures in the family has worsened the situation. Drug abuse among youngsters seems to be on the increase. The need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children. Breakdown of the extended family has put a lot of burden on the parents. Psychologists attribute this to the growing alienation of the new generation from their parents. Okay, so these are the sentences. Now, there is one thing that I've already discussed like few tricks with you, but in these sentences or almost all the exercise that you do, right? This paragraph, this sentence rearrangement exercise, okay, it tests your overall grammatical knowledge, right? Your grammar skills, that how much knowledge you have, right? So in this, the knowledge of clauses, the knowledge of relative pronouns, the knowledge of relative adjectives, the knowledge of particles, right? The parts of speech, tenses, active and passive voice, okay? All this is applicable. Now, if you're very good at it, you would be surely able to do it, right? But if you're not, then do not worry, okay? We'll be going through, few hints and few tricks, okay, that can help you to understand that what can be the correct sequence. Okay, so we have gone through all these sentences. Now let's read it. Okay, so if I ask you that what can be the first sentence, can you tell me what can be the first sentence? I haven't got any comments till now. Nice question, Arihant Jain. Okay. Okay, so let's start with the first question. Okay, first of all, let's discuss, that why other sentences except the first sentence, which has to be the first sentence, cannot be the first sentence. See, if you read the first sentence, that's A, absence of other parental figures in the family has worsened the situation. So can it be a first sentence, right? Can it be a first sentence? So it can't be a first sentence. Why? Because here we get a word that's called other, right? So you see other parental figures. So what it says, absence of other parental figures in the family has worsened the situation. क्योंकि जो parental figures हैं, जो बाकी parental figures हैं, like apart from your father and mother, जो बाकी parental figures हैं, जिनको आप parents की तरह देख सकते हैं, for example your uncle, your auntie, right? So ऐसे parental figures की absence की वजह से क्या हुआ है, जो situation है वो क्या हो चुकी है, worse हो चुकी है. तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर एक आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज हुआ है, राइट? द. सो व्हाट वी गेट टू नो, इट्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन व्हिच वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियसली, है ना? ये कैसे सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है ना? तो दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस प्लस एब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स. ठीक है, यहां पर ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स के बारे में शायद बात की थी, है ना? तभी जाके ये बाकी पेरेंटल फिगर्स के बारे में बात करेगा, राइट? तो इट कांट बी आ फर्स्ट सेंटेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी रीड इट. नाउ वी रीड सी वाला. ठीक है, the need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children. The need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children. Now, this question, this sentence is okay, but कहीं ना कहीं इसको पढ़ के हमें ये लगता है कि हाँ, इससे पहले ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट था, तो इस वजह से ही क्या ये मदर्स के वर्क करने की जो नीड है उसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो दिस ऑल्सो वुडंट बी अ फर्स्ट सेंटेंस. देन breakdown of the extended family has put a lot of burden on the parents. ठीक है, so यहां पर भी क्या है, यहां पर एक बात हो रही है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली यानी जो एक जॉइंट फैमिली होती है तो किस तरह से ब्रेक डाउन करती है. तो अब लोग जो है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 5 ब्रदर्स, ठीक है, तो वो अपनी अपनी फैमिली क्या अलग अलग क्रिएट करते हैं, है ना? दे लिव सेपरेटली इन सेपरेट हाउसेस, राइट? बट बिफोर ऐसा नहीं होता था. ऐसा क्या, हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली होता था, जॉइंट फैमिली. ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है. तो यहां पर भी हमें क्या पता चलता है कि एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी पहले बात थी, तो ये इसका एक कंटिन्यूएशन का एक पार्ट है ना? कंटिन्यू यहां पर ये हो रहा है. सो दिस कैन बी. देन साइकोलॉजिस्ट्स एट्रिब्यूट दिस टू द ग्रोइंग एलिनेशन ऑफ द न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब
You see the word this, it can't be a first sentence, right? Why? Because यहाँ पर आपको क्या एक रिलेटिव प्रोनाउन या एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आपको दिया है which is this। तो इसकी वजह से होगा क्या, अगर मैं दिस बोल रहा हूं तो दिस का मतलब मुझे नहीं पता, अगर मैं इसको फर्स्ट सेंटेंस की तरह रख सकता हूं। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस जो इस तरह के वर्ड्स हमें which adds this kind of words, it can't be a first sentence because I don't know what this means, right? So what I do, मैं, ठीक है, so what I do, मैं पहला लेके ये वाला चलता, ठीक है, I consider this first. So drug abuse among youngsters seems to be on the increase. So yeah, when I take this sentence as my first sentence, ठीक है, तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे टॉपिक के बारे में या थीम के बारे में पता चलता है which is the drug abuse। तो मुझे पता चलता है कि इस पैराग्राफ का ये जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, this talks about what? This talks about the drug abuse, है ना, drug abuse among youngsters। So ठीक है, drug abuse among youngsters seems to be on the increase। Okay, drug abuse among youngsters seems to be on the increase। ये हमें पता लग गया है कि ड्रग अब्यूज जो यंगस्टर्स में है उसकी कंडीशन के बारे में, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड वाला कौन सा हो सकता है। ओके, सो पहला हम लगाते हैं आर करेक्ट सीक्वेंस बी। ओके, नाउ सेकेंड, the need for, अब C को अगर हम पढ़ते हैं, the need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children। नहीं, ये तो एकदम totally different context हो गया ना, यहाँ पर तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर मदर्स की बात नहीं हुई थी, ना ही यहाँ पर कि वो कैसे अपना टाइम चिल्ड्रन को दे सकते हैं या नहीं दे पाते हैं, इसका भी कुछ यहाँ पर बात नहीं हुआ, तो ये हमारा सेकंड नहीं हो सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली हैज पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द पेरेंट्स, नहीं, यहाँ पर भी फिर से पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, सो दिस कांट बी वंस अगेन सेकंड सेंटेंस। देन absence of other parental figures in the family has worsened the situation। ठीक है, सो यहां पर भी नहीं एक करेक्ट सेंस बन रहा है बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट पेरेंटल फिगर्स। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं ई वाला, साइकोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट दिस टू द ग्रोइंग एलिनेशन ऑफ द न्यू जनरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ वी मेक एन एसोसिएशन, नाउ वी स्टार्ट मेकिंग एन एसोसिएशन। ठीक है, कि अगर फर्स्ट सेंटेंस में बात हुई है ड्रग अब्यूज की कि उसकी कंडीशन कैसी है यंगस्टर्स में, वो इंक्रीज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमें ये एक वी गेट लाइक इंट्यूशन कि इसके बाद क्या बात की जाएगी, इसके बाद एक कॉज के बारे में बात की जाएगी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंक्रीमेंट। ठीक है, जो इंक्रीमेंट आया है ड्रग अब्यूज के जो केसेस है यंगस्टर्स में, तो उसका कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, सो द सेकेंड sentence would be E. Psychologists attribute, the word attribute it means what? To find a cause, है ना, to find a cause, किसका cause क्या है, to a cause behind a specific behavior। So psychologists क्या cause मानते हैं कि what is the cause of this drug abuse, what they attribute it to? This to the growing alienation of the new generation from their parents। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो न्यू जनरेशन है और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है, एक गैप है। एलिनेशन मीन्स व्हाट, लोनलीनेस, है ना, एक सेपरेशन। ठीक है, आप अलग अलग रहते हो, ठीक है, सेपरेट, यू लिव सेपरेटली। सो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स और न्यू जनरेशन के बीच में एक गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना, बिकॉज ऑफ विच दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं आराम से, है ना, जो हम यूजुअली एक फ्री टाइम हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू डू इट विद देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू इट विद देयर पेरेंट्स। सो व्हाट्स हैपनिंग, इट इज दिस ग्रोइंग एलिनेशन causes this drug abuse। ठीक है, because your psychological state, your mental state, your emotional state, it's affecting somewhere, it's affecting you somewhere, to this depth that you start indulging in few negative activities, right, where you get that pleasure from। So what starts happening, you start getting engaged into drug abuses or other kind of pleasurable activities, right? Now we see that, okay, so our second would be E। Now we see the third. What can be the third option?
Third sentence. Okay. Now we read absence of other parental figures in the family has worsened the situation. Once again it cannot be, क्योंकि यहां पर अभी पेरेंटल, ठीक है, पेरेंट्स का तो यहां पर एक आ गया है, एक नरेशन, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट यहां पर पेरेंट्स का आ गया है, बट देन absence of other parental figures in the family has worsened the situation. तो अभी तो पेरेंट्स के एब्सेंस के बारे में ही बात नहीं आई है ना, अभी जस्ट क्या है, क्या बात आई है कि एलिनेशन है, देयर इज अ गैप, राइट, देयर इज लाइक पीपल, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ओके, दे आर लिविंग सेपरेटली, या वो साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात यहां पर इसकी नहीं है कि वो एब्सेंट है. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड समथिंग एल्स, सम अदर सेंटेंस. नाउ if you say the need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children, no, है ना, यहां पर भी नहीं, क्योंकि we need to find a cause, ठीक है, कि क्यों पेरेंट्स जो हैं, जो मदर्स हैं, वो उनको एक्चुअली काम करना पड़ता है. तो we look at this sentence, breakdown of the extended family has put a lot of burden on the parents, ठीक है. सो अब हमें पता चल रहा है, पहले तो हमें ये पता चल रहा है, वी कैन मेक एन एसोसिएशन, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग गैप, राइट, बिटवीन द न्यू जनरेशन एंड between parents. Okay, what's happening is why is it? Because previously we used to live in a joint family, right? So उसमें क्या होता था, if there are more members in your family, so it is easier for you to spend time with one another, right? But now we have small families, right? We have small families with only like 4 or 5 members. So it happened because of breakdown, है ना? So breakdown of the extended family has put a lot of burden on the parents. So now because of this breakdown of the family, ठीक है, क्या हो रहा है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वो ब्रेक हो रही है ना. लोग क्या है, अगर if there is one man and he has 5 sons, so क्या होगा, वो 5 sons previously एक साथ रहते थे, उनकी जो भी फैमिली होगी, ठीक है, वो साथ में एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना. सो दैट्स हाउ यू हैव योर अंकल, है ना, अंकल आंटीज, राइट, आपके चाचा ताऊ जी, ये सब, है ना. लेकिन बट नाउ व्हाट हैपेंस इज दोस 5 sons would separately have their houses, ठीक है, they would live separately, not in a joint family. तो अब एक भाई का अपना घर होगा, एक भाई का अपना घर होगा, है ना, and they would have their own separate families. So this is happening. अब क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हो, तो यू कैन सपोर्ट वन अनदर इन मेनी वेज, लाइक साइकोलॉजिकली, ठीक है, इमोशनली एंड फाइनेंशियली एज वेल, मेनली, है ना. लेकिन नाउ सिंस यू आर लिविंग इंडिपेंडेंटली, यू आर लिविंग सेपरेटली, सो व्हाट विल हैपन, यू नीड टू टेक ओवर your financial needs as well, right? Your financial support, how to support yourself financially, how to make yourself strong, right? So वो आपको देखना पड़ेगा. तो क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट फैमिलीज क्रिएट हो रही हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, बर्डन पेरेंट्स पर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है. अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, बर्डन ज्यादा पड़ रहा है, तो ठीक है, हमारा थर्ड क्या हो गया, डी. अब इसका अफेक्ट क्या है, लाइक व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है, इसका क्या आफ्टरमाथ है, this. Now we see this, right? The need for many mothers to work has put an additional claim on the time available for the children. तो अब हो क्या रहा है, males, men in our society, okay, they are working since always, right? Since long time, right? But women, they do not work usually, right? So what's happening? But now in this modern era, okay, where our society is opening up, but simultaneously there is need there's need of growing income, right? Because in this expensive era, right? So what's happening is this, the mothers, the females, the women also have to work, they also have to give their contribution within the family. So what's happening in this, because they need to support themselves, their family, okay, to uplift this burden. So what is happening, the mothers have to work, ठीक है, जो मदर्स हैं उनको काम करना पड़ता है. और क्योंकि अगर आप देखें जो बच्चों की जो परवरिश होती है, ठीक है, जो बच्चों बिटवीन द फादर एंड द मदर, ओके, मदर्स यूजुअली स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, ठीक है, in nursing them, in taking care of them, while because usually in our society men they are at work, the fathers are at work, and women in house they nurse children, right? So यहाँ पर जो मदर्स हैं, क्योंकि दे हैव टू गो टू देयर वर्क, सो व्हाट इज हैपनिंग,
Okay, it has put an additional claim on the time available for the children. So because of this, now the mothers, okay, they are not able to take enough time for their children. ठीक है? So इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से ही हो रहा था क्या? जो जनरेशन, न्यू जनरेशन और पेरेंट्स के बीच में एक गैप था. ठीक है? So this would be our fourth. Okay? Now. अब हमारा बचा क्या? B, ये तो 4 हो गए. अब हमारा ऑब्वियसली लास्ट बचा A, तो दिस विल बी आवर लास्ट, है ना? सो एब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स इन द फैमिली हैज वर्सन द सिचुएशन. ठीक है? सो अब क्या हुआ? अब हमें पता चलता कि हाँ, एब्सेंस ऑफ पेरेंटल फिगर्स का, एब्सेंस ऑफ अदर पेरेंटल फिगर्स का क्या मतलब है कि बाकी जो पेरेंटल फिगर्स हैं, बिकॉज पेरेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी क्या बात कर दी कि जो पेरेंट्स हैं, द मदर्स एंड फादर्स, दे आर ऑलरेडी एब्सेंट बिकॉज दे नीड टू गो एट देयर वर्क्स, राइट? बट नाउ द अदर पेरेंटल फिगर्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो एब्सेंट, सो व्हाट इट हैज लेड टू, इट हैज led to the worsening of the situation even more. Now we get to know कि ये जो the situation था, ये कौन सी situation थी? It was drug abuse. ठीक है? या फिर जो टाइम है चिल्ड्रंस के लिए, जो जितना अवेलेबल है वो क्या है? कम है. तो इस सिचुएशन को उसने क्या कर दिया? वर्स कर दिया. ठीक है? सो दिस इज आ करेक्ट सीक्वेंस. ओके, BEDCA. ओके, सो नाउ we move to the question. Okay, so which sentence should come first in the paragraph? First sentence की हम बात कर रहे हैं ना. So we have already seen all the correct sequence. So B would be the first in the paragraph, right? Okay, now which sentence should come last in the paragraph? So we see which was the last. So we see A was the last, है ना? तो हम A को चूज करेंगे. ठीक है? नाउ which sentence should come third in the paragraph? Let's see. So D was the third. Okay, now which sentence should come second in the paragraph? Let's see. E, right? Now which sentence should come fourth in the paragraph? Let's see. So C was a fourth, right? So this is the question that we just did. Now we move to next question. Okay, so kindly read this question. I would appreciate if you people comment down, right? Okay, so now we go to this question. Other than carbon, manganese, nickel, chromium, tungsten, silicon, and other alloying elements are added to steel. Second, pure iron is too soft and ductile for many industrial applications such as making tools, machines, structure, railway lines, automobiles, and others, and therefore necessary to harden and strengthen it. This enhances the characteristics such as tensile strength, hardness, abrasion resistance, corrosion resistance, and high temperature resistance of the plain carbon steel. Carbon exercises the most powerful influence on the mechanical properties of steel after heat treatment. This is best done by adding carbon, the atoms being of small size, become part of the space lattice of iron, thus forming a solid solution. Now we can attempt this question within actually no time, right? Why? Because see, once again, we have this demonstrative pronoun, we once again have this. So yeah, you can once again cancel this. These two sentences cannot be first one. Plus once again this, other than, because we have already talked about carbon, other than carbon, right? Then we are talking which else material can we add to steel, right? So this cannot be our first. So now we see it can be either pure B or C. Okay, so let's consider this as a first. Okay, B. So let's read. Pure iron is too soft and ductile for many industrial applications such as making tools, machines, structures,
railway lines, automobiles, and others, and therefore necessary to harden and strengthen it. So what it basically is saying that कि जो आपका pure iron है, right? That's very delicate. That's very soft, right? It's so soft that it cannot be used in manufacturing of these, products. For example, in automobiles, or it cannot be used to build the railway lines, right, or machines or tools, etc. So what it needs to be done, it needs to be hardened and strengthened, right? So now we need to see, somewhere we get once again sense that now this paragraph or these sentences must talk about that how can we make that iron tough or hard, right? So now can we see where it talks about that thing? We see E. Read it. This is where it's done by adding carbon. The atoms being of small size become part of the space lattice of iron, thus forming a solid solution. Right. So now we get to know that this sentence is the continuation of this sentence. Right. Here we talked about that pure iron cannot be what? It cannot be used in the manufacturing of certain products. Right. Because it's too soft. So what we need to do, we need to harden it or we need to strengthen it. Now how it can be done? It can be done by adding carbon. Now we get to know कि this, ये आपका जो this है ना? This is what? This is this. That how can we actually harden and strengthen it? So it's talking about this process or this work, right? This is best done. That means to harden and strengthen the iron. Okay. How it can be done? It can be best done by adding carbon. The atoms being of small size become part of the space lattice of iron, thus forming a solid solution. Okay, so now we get to know कि कैसे हम आयरन को टफ बना सकते हैं. उसके साथ हम कार्बन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, उसके जो स्मॉल एटम जो होते हैं वो आयरन के जो लेटिस स्पेस है उसमें जाते हैं और आयरन को वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, नाउ तो हमने क्या फाइंड आउट किया अभी का करेक्ट फॉर्म? वी हैव द फर्स्ट इज बी, देन वी सॉ ई, राइट? नाउ we see now the next. What can be a third? Can it be other than carbon? No, because we haven't talked till now about carbon. Then can it be this enhances? No, because we already know कि एक sentence finish हो चुका है ना, तो ये किसी एक और process के बारे में बात कर रहा है. So we will see D. Carbon exercises the most powerful influence on the mechanical properties of steel after heating treatment. ठीक है, so deep. अब एक इसके बारे में बात करें कि जो कार्बन है उसको जब स्टील के साथ आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं या ऐड करते हैं, तो इट इन्फ्लुएंसेस इट पावरफुली. ठीक है, जो स्टील की जो प्रॉपर्टी है उसको पावरफुली क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, तो हमारा डी हो गया. नाउ वी सी, ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट सेंटेंस. अभी तक हमने किसके बारे में बात की, कार्बन के बारे में, कि वी कैन ऐड कार्बन टू द स्टील. नाउ वी रीड द फर्स्ट सेंटेंस दैट अदर देन कार्बन व्हाट एल्स कैन बी added to steel. So other than carbon, manganese, nickel, chromium, tungsten, silicon and other alloying elements are added to steel, right? So now we get to know ना कि other than का क्या meaning था, because carbon के already इसके बारे में बात हुई थी D वाले sentence में. अब हम बात कर रहे हैं कि कार्बन के अलावा और क्या कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है. ठीक है, सो हम करते हैं A हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस. अब बचा आपका C. So, ये सब को ऐड करने स्टील के साथ ऐड करने से क्या होता है? This enhances the characteristics such as tensile strength, hardness, abrasion resistance, corrosion resistance, and high temperature resistance of the plain carbon steel. So now we get to know that this is the effect of this this alloying material, that how when the carbon and other material is used with steel. Okay, so the correct sequence would be this. Now we do the questions over these. Okay, so let's see what among the following will be the third sentence of the paragraph after the rearrangement. So we need to see the third statement, right? So the third statement is D. So let's
check it. Okay, D. Then next, which among the following will be the first sentence of the paragraph after rearrangement? Let's go back. So the first is B. So B. Which among the following will be the first sentence of the paragraph after, fifth sentence of the paragraph after rearrangement? So we see the fifth one. So it's C. Okay. Which among the following will be the fourth sentence of the paragraph after rearrangement? So we see the fourth one. So it's A. Which among the following will be the second sentence of the paragraph after rearrangement? So we see the second, it is E. Okay. Right? Now, we will do this last question. Okay. So, read it. Read these sentences and come up with the correct sequence. Okay. Let's go through. Now, this is the type of question where sentence A is fixed and where sentence F is fixed. We have six statements here, and out of them, the first and last one are fixed. That means you don't have to change them. You have to work on these four statements, these four sentences, right? So now when we go through the first statement, but how does a new word get into the dictionary? We see that it is a question. It is an interrogative question, right? That means what? Now, whatever the sentence would proceed, it would answer this question. So what it is asking that, but how does a new word get into the dictionary? कि एक dictionary में कैसे एक new word को हम incorporate करते हैं या include करते हैं, ठीक है? So see, अगर हम पढ़ें B वाला, when a new dictionary is being edited, a lexicographer is a person who compiles the dictionary, okay? Collects all the alphabetically arranged citation slips for a particular word. देखिए बात यहाँ पर हो रही है editing की, है ना? तो कहीं ना कहीं हमें क्या ये लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, because this sentence is talking about the further process कि कैसे उसको collect हम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे हम उसे arrange कर सकते हैं, है ना? But here what is the question is asking कि एक new word को कैसे dictionary में हम include कर सकते हैं? तो we read then further. C वाला, the dictionary makes a note of it on a citation slip. तो ये भी कहीं हमें नहीं लगता कि ये first इसका जो आंसर जो इसके फर्दर जो प्रोसीड कर सकता है, ठीक है? Then the moment a new word is coined, it usually enters the spoken language. Then we read E. The word then passes from the realm of hearing to the realm of writing. यहां पर आपका यूज हुआ है then, है ना? आपका यूज हुआ है क्या? Then. So यहां से क्या एक आपको बात की जा रही कि कुछ हुआ है उसके बाद, है ना? तो then जो word है ये सब में पता चलता है कि it can't be the first sentence, right? So D would be our first. That means proceeding after the A, right? So the moment a new word is coined, it usually enters the spoken language. So now this sentence answer this question that, but how does a new word get into the dictionary? कैसे एक new word dictionary में enter होता है? The moment a new word is coined, जैसे ही एक नया शब्द बनता है ना, या एक trend में आता है, ठीक है? It usually enters the spoken language. तो वो क्या होता है? वो spoken language में यूज होना चालू होता है. That means we start speaking that word, we start using it in our conversation. उसके बाद क्या होता है? अगर हम पढ़ें, आप अगर पढ़ोगे तो उसके बाद आपको क्या लगेगा? The word then passes from the realm of hearing to the realm of writing. यहां पर बात हुई थी spoken language की, आपने उसे सुना and you started using it in your speaking, right? You started using it in a conversation, and after that what happened? The word then passes from the realm of hearing to the realm of writing. That means first it started getting used in your daily conversation, in your daily spoken language. After that it started being used in writing. ठीक है? तो हमने चैटिंग्स में उसको लिखना चालू कर दिया, लेटर्स में हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? So this is the continuation of this. So our correct sequence would be D, then E. ठीक है? Now what we see,
When a new dictionary, अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए when a new dictionary is being edited, a lexicographer collects all the alphabetically arranged citation slips from a particular word, and फिर हमारे पास दूसरा बचा, the dictionary makes a note of it on a citation slip. अब यहां पर it अगर हम पढ़ेंगे, ये हमें कुछ फर्दर प्रोसेस के बारे में बताता है. आपका जो बी वाला सेंटेंस है ना, कि जब हम डिक्शनरी को एडिट करते हैं, ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर क्या करता है, वो जो वर्ड्स हैं उनको वो अल्फाबेटिकली अरेंज करना चालू वो करता है, ठीक है. लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा बात की बात है. इससे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं. द डिक्शनरी मेक्स अ नोट ऑफ इट ऑन अ साइटेशन स्लिप. जब आप इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इट जो यहां पर है वो आपका ये वाला वर्ड है, जो क्या सबसे पहले आपके स्पीकिंग में यूज होता है, देन इट इज यूज इन योर राइटिंग, एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, the dictionary makes a note of it, the dictionary observes it, it makes a note of it, and then it is on its citation slip. फिर वो क्या उसके citation slip में वो reflect होता है. That means उस dictionary में वो फिर क्या होता है कि reflect होता है क्या, this is also some word. अब आपका फिर ठीक है, हम करते हैं आपका C, उसके बाद आपका हो गया B, एक जो लास्ट वजह है. फिर उसके बाद क्या होता है, सो व्हेन अ न्यू डिक्शनरी इज बीइंग एडिटेड, फिर फाइनली जब वो साइटेशन स्लिप में आ चुका है वो नया वर्ड, और वो डिक्शनरी फिर एडिटेड होती है, उसके बाद क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर कलेक्ट्स ऑल द अल्फाबेटिकली अरेंज्ड साइटेशन स्लिप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्ड. अब उसके बाद वो जो वर्ड है दैट इज अरेंज्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. So yeah, this is a correct sequence, right? So let's do the questions. Okay, so which sentence should come first in the paragraph? First, D, right? So we choose it as answer. So D. The next, which sentence should come last in the paragraph? We see which was the last, so it was B. The next, which sentence should come third in the paragraph? So we see which was a third, and that was C. And then last, which sentence should come second in the paragraph? So we see which was a second, that was E. So this is it. And okay, so we already had the fourth and fifth, right? We already had the A and the last one fixed, right? So no need of these. So this was all for today, guys. Thank you so much. I hope you liked the session and you enjoyed it. So if you like the session, please certainly comment down, like it, and whatever suggestions or whatever feedbacks you want to give it, okay, you can certainly comment it down. So thank you so much. See you next time. Have a good day. Bye bye.